Yes, good evening everyone. Welcome to Lukmaan IAS. This is DTRS session, Daily Takkar Rapid Series. In this lecture series, daily we are discussing 10 quality MCQs based on today's current affairs. Yesterday we could not have the session because we are having live analysis session for UPSC mains geography section, and that's why we'll cover today 15 MCQs. This is class 92 and the lead topic for today is places in news, Gaza Strip. Right, so we'll try to discuss these MCQs one by one. Before that, let me announce here that geography module for GS studies, general studies, we can say that a particular syllabus of our mains examination is going to start here, but this particular module will cover both prelims as well as mains examination. And yes, it is part of GS foundation course, so you can join GS foundation course at Lukmaan IAS, and individually also you can join this particular module also. It is going to start on 19th of October, and let me also tell you the features of this particular course. This will cover the comprehensive syllabus for prelims as well as mains examination. Along with that, there will be special emphasis on the conceptual clarity, especially physical geography, the important topics like geomorphology, climatology, and the relevant concept involved in that. There will be in detail dictation of all important topics in the classroom itself, so that you can have the exam ready notes, especially for mains examination. Thereafter, focus will be on India and world mapping, both static as well as current developments. There will be more interactive sessions with the help of animated videos, maps and diagrams, because geography is learned through audio visual. We can say that study material that is more long lasting and more, we can say that, understood by the students. There will be 3 integrated tests for prelims as well as mains examination, and on demand there will be personalized mentoring. I will be let's say guiding students here for individual mentoring also. Students can talk to me in let's say in an individual manner and solve their doubts also. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू फील कि ज्योग्राफी आपका ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ है अभी तक, तो इट इज स्टिल टाइम. बिफोर डिसम्बर यू कैन कवर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल हियर. Right, now let's discuss first today's quotation and then we'll talk about today's MCQs. So today's quotation is saying here, believe in yourself, you are the braver than you think, more talented than you know, capable of more than you imagine. Yes, this is true. Those great people, great personalities, they never knew that they will achieve such kind of heights in their professional career, success in their life, and just they believed, okay, they believed in themselves and they could let's say achieve some kind of heights. You can take example of sportsmen, Sachin Tendulkar you can give example, or MS Dhoni you can give example, or many, let's say, leaders from grassroots level. They have achieved, we can say, such kind of their professional careers and they have become the national leaders. You can take the example of the present Prime Minister also here. While giving this example, believing in yourself, you are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than. Now, when you believe in yourself, you start, we can say, working on your goals, objectives, and it motivates you to achieve them. Okay, so yes, during this exam preparation also you face many a times such, let's say, ups and downs. कोई एक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स, और लेट्स से आपको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई मेरी सही डायरेक्शन में हो रही या नहीं है. सो यू शुड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट में आपका वीकनेस हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको ठीक से नहीं समझा है, तो उसकी वजह से आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते. So you should be continuously motivated by believing in yourself that you can achieve what you believe, what you think, and more than that you can say, and you are more talented than you know, capable more than you imagine. So this is relevant to you not only for preparing this examination but even after, so let's say getting IAS rank also, क्योंकि ये तो एक जर्नी का पार्ट है, ऐसा आप समझिए.
ठीक है, और IAS पास होना, IAS बनना इज अ काइंड ऑफ लेट्स से आपकी लाइफ का एक पड़ाव है, उसके बाद भी आपकी लाइफ है, राइट, एंड दैट इज वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी एडवेंचरस जर्नी फॉर यू, right? So today's topics, these are today's topics, and let's solve these MCQs one by one now. Yes, Gaza Strip is in news. Palestine, Israel-Palestine conflict, we are aware about that, and this Gaza Strip is a narrow strip located in Israel, or we can say along the border with Israel and Egypt. And this is having, we can say, border with Mediterranean Sea also. Mediterranean Sea also. Okay, so the question here it is saying that it is located between which of the following countries? It is located between Israel and, this is true. Okay, so mapping part, you should be aware, in past UPSC has asked consistently questions related to, like, for Golan Heights, or last to last year question on Levant region. So that means Middle East and West Asia region, always UPSC focuses from mapping section. Past में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. That's the answer to the question in the Hindu quiz that came today, the first very question. Right. Yes, of course, that's what I'm telling you. ये UPSC ने पूछ लिया है पास में 2 साल पहले. पास्ट में देखो गोलन हाइट्स पूछा हुआ है, तो गोलन हाइट्स आर लोकेटेड टू द नॉर्थ, वी कैन से नदर्न पार्ट ऑफ इजराइल, और ये जो लेवेंट रीजन है वो पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है मेडिटेरियन का, बेसिकली द बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ वेस्ट एशिया, वो उसको लेवेंट रीजन बोला गया है, राइट. सो इट कैन बी आस्क्ड, एंड यस ऑफ कोर्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, उससे रिलेटेड आपको प्री में शायद क्वेश्चन ना आए जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, बट static part, and that relates to our geography mapping section. Fine. Yes, you can have a look here. West Bank, if suppose West Bank is asked, it is between border with Jordan. Also you should know location of Dead Sea, border with Jordan. ठीक है, West Bank, but this is Gaza Strip. And you should know it is having opening with Mediterranean Sea. और ये इजिप्ट और इस वर्ड, और ये कौन सा एरिया है, ये इजिप्ट का, वेरी गुड, वो भी आ सकता है आपको, ठीक है. जैसे ये लेवेंट रीजन पूछ रहा है, गोलन हाइट्स, तो सिनाई पेनिनसुला कैन बी आस्क्ड. इन पास्ट वी हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. There was this article, text and context page, yesterday or day before yesterday, the Hindu newspaper, about scheduled areas, right? So related to that, part 10 of Indian Constitution deals with provisions related to scheduled and tribal areas. This is true. Along with that, President of India can declare any area as scheduled area. Who is the authority in India? President is the authority. You should know that Schedule 5 and Schedule 6, Schedule 5 we can say scheduled areas, Schedule 6 also we can say tribal areas. So you should know the constitutional provisions, exact we can say provisions. Constitution of India provides for proper criteria of identification. Generally Constitution do not provide any criteria for any kind of thing. Keep this in mind. It provides skeleton, and thereafter the executive or through we can say any particular law in parliament can decide on criteria. But here in this case, the identification of scheduled areas is not mentioned in the constitution or even any law of parliament. It is we can say executively decided by the executive. ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कंस्टिट्यूटेड इन शेड्यूल एरिया एडवाइसेस चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिगार्डिंग मैटर. नाउ वर्ड प्ले, दिस इज व्हाट यूपीसी डज. हमें लगता है कि हाँ चलो सीएम को एडवाइस करता होगा गवर्नर, ठीक है. पास्ट में यूपीसी ने ऐसा बहुत किया हुआ है स्टेटमेंट्स में, अथॉरिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चेंज कर देते हैं. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज two statements are correct regarding this. B is the correct answer, right? Yes, online students, you also give answers to these questions.
regarding dolphin, Gangetic dolphin. Recently, some of the dolphins were rescued from some canals in northern India, northern Indian states. That's why it is in news. Gangetic dolphin is found only in India, Nepal, Bangladesh also. Only incorrect. Nepal, Bangladesh also. ठीक है. So Ganga river system, we can say its tributaries and we can say distributaries, all this. It is incorrect. Females are larger than males. This is true in terms of characteristics. They find their prey through echolocation. Essentially, they are blind. Gangetic dolphins are blind and through echolocation. So, when they are, let's say they want to find the prey, so through sonic waves, they are sending these waves are reflected from the prey and they are deciding the distance from the prey. ये सारी चीजें हैं. IUCN status of Gangetic dolphin critically endangered. It is endangered. तो ये गलत है. Again two statements. Sorry, only हाँ बराबर है. ठीक है. B is the correct answer here. Now you know that freshwater dolphins around the world, their local names. Match the following type of question. Riverine dolphins जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, क्या है? इंडियन डॉल्फिन को क्या बोला जाता है? गैंगेटिक डॉल्फिन को सुसु. रीजनल नेम, लोकल नेम. गैंगेटिक डॉल्फिन सुसु. व्हाट अबाउट वन फाउंड इन पाकिस्तान, इंदस रिवर सिस्टम, क्या नाम है उसका? भूलन. Then the one found in Amazon, river, that is बोटो. ठीक है. और जो चाइना में यांगजे रिवर है, यांगजे रिवर, तो वहां पे बाइजी. These are the local names of different riverine dolphins. You should remember this. Match the following type of question is very standard question for. ठीक है. ओके. अमेजोन रिवर. बाइजी, यांगजे रिवर, चाइना. ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, recently Sri Lanka assumed the presidentialship of this Indian Ocean Rim Association. That's why it was in news. So this is Indian Ocean Rim Association. तो Indian Ocean के जो littoral countries है उनका है ये. There are 14 members at present. India is the foundation member, we can say founding member. It was formed in 1997 and it is to foster the economic cooperation. Along with that, we can say that security is also part of it. मैरीटाइम सिक्योरिटी. ठीक है. इकोनॉमिक भी है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है इसका पार्ट. सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट. इंडिया हैज बीन चेयर ऑफ द एसोसिएशन ओनली वंस सिंस इट्स इंसेप्शन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. हमें लग सकता है कि इंडिया इज ए डोमिनेंट कंट्री, तो एक बार ही क्यों होगा अब तक, बट ये एक बार ही हुआ है. ठीक है. एज ए चेयर इतने सालों में तो हमें लगता है कि बहुत बार हुआ होगा. But this is true, this is correct fact. Okay, so all three is the correct answer here. ठीक है. Okay. Okay, so recently there was one study talking about the problems that we face because of interlinking of rivers. We think about interlinking of rivers as a solution to the problem of water scarcity. But the experts are saying that we are thinking about linking these rivers only on land. ठीक है. और उसी के implications के ऊपर studies हो रहा है. But hydrological cycle that we have is not only related to water flowing on the land. When the water is flowing through these rivers, there is major aspect of evaporation from these rivers, and this evaporation plays important role in the hydrological cycle. Okay, now what happens is when the water is transferred from one basin to other basin,
That means the transfer water will be evaporated at the other place. जो यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे evaporation कम हो जाएगा, वहां पे evaporation ज्यादा हो जाएगा. That means that is going to play important role in the humidity of that region and subsequent precipitation. ठीक है, तो इस तरीके से कोई स्टडीज नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा स्टडी आया है. एक interlinking of rivers, we only focus on the water transfer on the land, but what is happening through atmosphere, evaporation angle. So yes, river basins in India do not act as independent entities. That is true. River basins in India are connected through feedback loop between land as well as atmosphere. ठीक है, so that means land के थ्रू तो हो ही रहा है, but atmosphere के थ्रू भी क्या हो रहा है, they are connected, we can say. River basin. So we can say that A is the correct answer. Statement 2 is explaining the statement 1 here. Fine. Now, very simple one, but it is in news. Nobel Prize for Economic Sciences was given recently. Women participation. Goldin or Godwin, I'm not exactly remembering the name of lady, but her contribution especially related to understanding the women participation in labor market. What are the Claudia Goldwyn, right? So factors which decide women's participation in labor market and their productivity. Participation and productivity both has been studied by her, and not only in let's say few years, तो उन्होंने कुछ पिछले centuries का भी study किया है, 200 years का ना. So her study has contributed to understand how women participation in the labor market is influencing the economic growth of the country, which factors are restricting women participation in labor market. In developing countries like India, especially with gender disparities, such kind of studies are very important in policy making. ठीक है, to increase the women participation in labor market. When we understand these factors, we can work on these factors. ठीक है, so C is the correct answer here. We may have ED lecture on this particular topic because we have to cover all the Nobel prizes from, we can say, मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो. बाकी के तो साइंस एंड टेक के है, लिटरेचर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या पीस का भी नहीं, सिर्फ नाम याद रखिए कौन से कंट्री से है वो याद रखिए, बट इकोनॉमिक्स फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट. यस, विथ रेफरेंस टू द प्लांट स्पीसीज नोन एज हाइड्रिला. ठीक है, तो हाइड्रिला यू मे हैव रेड अबाउट हाइड्रिला इवन एट स्कूल लेवल. ठीक है, इट इज इन्वेजिव स्पीसीज and it is very competitive with the native let's say species, and that's why negatively impacts the native ecosystem. The unique characteristics of this is that it is basically tolerant to salt water. ठीक है, salinity. So generally fresh water, let's say plants जो होते हैं, aquatic plants, they are not, let's say, tolerant to changes in the salinity or even temperature. But this hydrilla is tolerant to, we can say, increase in salinity also. That's why it is growing even in higher saline waters. ये जो है intolerant लिखा है ना, ये गलत है. Okay, yes, and it is floating aquatic plant. This is incorrect. It is not floating. ठीक है, तो ये जो है उसके हम बोल सकते हैं कि कोई भी वाटर बॉडी के बेस पे होता है, ग्राउंड पे नीचे. इट इज नॉट फ्लोटिंग. ओके, वाटर हाइसिंथ इज फ्लोटिंग. हाइसिंथ जो हम देखते हैं ना, दैट इज ऑल्सो इन्वेजिव, वी कैन से, एंड वेरी हार्मफुल. सो वाटर हाइसिंथ इज फ्लोटिंग, दिस वन इज नॉट, एंड दिस इज एक्चुअली it has invaded most of the continents, this hydrilla, and this is becoming problem in USA. Recently it was in news. ठीक है, तो only one is correct here. A is the correct answer, right? Okay. ये देखिए, world's most invasive species found in Michigan for the first time. वहाँ पे वो बैंड है मिशिगन में, यूएस में, तो वो मिला है. Hydrilla is native of which country and which region? We have to see that. ठीक है,
नेटिव कौन से इसमें है? तो जनरली नेटिव का जो होता है बड़े ट्रीज का अगर पूछेगा तो यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है. नाउ देयर इज डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस पैराग्राफ refers to which of the following committee report. Now this committee report we know about केलकर भगवती कमिटीज, बलवंत राय मेहता, ये पीआरआई से रिलेटेड है. भगवंत केलकर इकोनॉमी से होगा, ही वाज इकोनॉमिस्ट तो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा. भगवती ही वाज आल्सो इकोनॉमिस्ट. या फिर वन कैन यूज द लॉजिक पॉलिटी से रिलेटेड होगा भगवती, जुडिशरी से रिलेटेड हो सकता है. हाँ, तो भूरिया कमिटी एक बचता है. अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. recognize face to face community and hamlet or group of hamlets managing its own affairs to be basic unit of self governance in scheduled areas. Also notes that most of the resource tribal inhabited regions divided into administrative boundaries. It is talking about tribal regions and self governance. ठीक है, तो one can use the logic and eliminate and mark A as the correct answer. भूरिया कमिटी, ठीक है. Okay. So the answer to this PYQ of 2019, whether it's a Secretary Commission or Senate ARS. It was very confusing, I guess. मुझे याद है इस चीज का. Which one of the following suggested that governor should be the eminent person from outside the state and should be the detached figure without intense political link? Yes, I guess it is. हाँ, सरकारिया कमीशन का ही है, सेंटर स्टेट रिलेशंस का ऐड किया है आंसर इसमें. C is the correct answer regarding this. ठीक है. Right. Again, description based question, but yes, description is given, but the question is not related to description. ठीक है, as such. देखिए आप पूरा डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट क्या करता है, कभी कभी ऐसा यूपीएससी करता है, बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन लिखेगा, बट दैट क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू दैट इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन हुआ इंफॉर्मेशन है, आगे जाके कुछ तो पूछ लेता है. Okay, recently 19 feet tall statue of Dr. B.R. Ambedkar, labeled as Statue of Equality, was unveiled outside India. It is unveiled in which of the following countries? बाद में ये सारा उनके फीचर्स बता दिए हैं स्टैचू के बारे में, और यहाँ कंट्री पूछा है. ओके, सो आंसर हियर इज, नाउ you should be smart in such kind of question. टाइम कैसे बचाना है एग्जाम में, बिकॉज इट इज टाइम मैनेजमेंट. दिस एग्जाम इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, तो आपको ये सारा चीज जल्दी जल्दी पढ़ने आना चाहिए. ओके, रेडी शेल्डक, this particular migratory species of duck family, recently in Uttarakhand such species have arrived in winter. ठीक है, तो it is largest member of duck family, that is true, and yes, it is monogamous bird, generally made for lifetime, and it is herbivorous. ये herbivorous नहीं होता है, generally birds जो होते हैं वो omnivorous होता है. ये आप logic लगाइए थोड़ा सा. Generally birds are omnivorous. ठीक है, it has conservation status of critically endangered, नहीं. ठीक है, it is least concern, threatened नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो these two are incorrect, first two are correct, B is the correct answer. Okay, fine. You can see the photograph also, it is very beautiful. ठीक है. ठीक है, species से related. हाँ, this is also unique. ठीक है, हाँ 15 है, कल हमने सेशन नहीं लिया था ना, तो जल्दी से कर लेते हैं. यस, विथ रेफरेंस टू मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्नो कैप्स ऑफ माउंटेन्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन्स. वेर यू अवेयर अबाउट दिस? दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड, नहीं तो उसका बॉटम मिलेगा ही नहीं ना. इसीलिए तो अभी ये हाइट वेरिएबल हो रही है. The highest peak of Europe recently, वहां पे 2 मीटर उसकी हाइट कम हुई है 2 साल में, इसलिए ये न्यूज में है. Within 2 years 2 meters height has reduced, क्योंकि वो स्नो कवर कम हुआ है उसका. ठीक है, the climate change has direct impact on maximum height, this is true. ठीक है, और ये not लिखा है, it is included, so answer here is
क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ठीक है। You can see here Mount Blanc, highest peak in Western Europe, shrinks by over 2 meters in last 2 years. ठीक है, okay, so related to unsecured loans, ठीक है, unsecured loans are basically, we can say that there is no security from the borrower taken by the loan, or we can say lending authorities, तो इसको unsecured बोला गया था। थोड़े से कम चांसेस होते हैं कि वो रीपे करेगा, ठीक है। So there is more concern related to unsecured loans, and along with that there is, let's say, provisioning aspect by the banks, कि अगर इतना लोन दिया है तो उसके लिए बैंक जो है इतना अमाउंट उसके परसेंटेज में प्रोविजनिंग करके रखता है कि कल को ये रीपे नहीं किया तो पूरा लॉस नहीं हो, ठीक है। तो उनको सिक्योर लोन्स बोलते हैं। अनसिक्योर मींस उसमें वो प्रोविजनिंग नहीं करता है उस तरीके से, ठीक है। ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू ऑफर अनसिक्योर्ड लोन्स, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। सो ऑल लेंडिंग एंटिटीज कैन गिव अनसिक्योर्ड लोन्स। द बेस्ट एग्जांपल इज नाउअडेज बाय नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ है, EMI वाला, जो सारा हम ई कॉमर्स से वेबसाइट्स पे देखते हैं, राइट। सो यू कैन बाय इन इंस्टॉलमेंट्स, जैसे आपको ऑफर्स आता है, आप खरीदिए पे लेटर, 1 महीने बाद आप पैसे दीजिए आपकी सैलरी आने के बाद, ठीक है। बेसिकली इट इज टू provide some kind of credit facilities and thereafter they will charge you some interest rate, तो उससे रिलेटेड है। अनसिक्योर्ड है क्योंकि वो कोई भी किसी भी तरीके के सिक्योरिटीज आपसे नहीं लेकर, राइट। दिस इज ट्रू, दिस इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ RBI, gross NPAs in unsecured loans is higher in public sector banks. use your logic, NPAs ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, अगेन आंसर इज, ठीक है। ओजोन होल, okay, ozone hole over Antarctic reaches maximum size during winters in northern hemisphere. We learn this in geography, the problem of ozone hole depletion, ठीक है। environment में भी पढ़ता है, geography में भी पढ़ता है। basically ozone, the problem of ozone hole is prominent over Antarctic, and we know that the ozone hole formation and increase in its size is observed during winter in southern hemisphere. Why? Because when there are excess less temperature, so ठीक है, बहुत low temperatures हो जाता है, during that time only there is formation of polar stratospheric clouds, PSCs, that further leads to ozone depletion, chemical reactions that are happening on the surface of this, we can say polar clouds जो होता है। So here it is saying northern hemisphere, this is incorrect, no, southern hemisphere होना चाहिए। Once we get that statement 1 is incorrect, we got the answer. Last year question, this year's question paper prelims, this type of framing there were 17-18 questions out of 100. तो ट्रिक क्या है यहाँ पर, दोनों में से एक भी इनकरेक्ट है तो आपको आंसर मिल जाता है। इफ स्टेटमेंट 2 is incorrect, C is the correct answer. Okay, the problem lies when both are correct, तो फिर उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि ये सही explanation है या नहीं है। Here, as the temperature rises in the stratosphere, the size of ozone hole reduces. That is true, right? When there is less temperature, its size is bigger one. As the temperature rises, its size reduces, we can say. This is correct. So D is the correct answer here. Ozone hole above Antarctic is now 3 times the size of Brazil. ठीक है, वो इस टाइम पे होता ही है बड़ा, ठीक है, वो बाद में फिर कम हो जाता है, राइट। सो एट प्रेजेंट वी कैन से दैट देयर इज एंड ऑफ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नाउ देयर विल बी विंटर, इस तरीके से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डांसिंग फ्रॉग्स आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, दिस इज ट्रू, इट इज अ काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रॉग्स, एम्फीबियंस। IUCN status of dancing frog is endangered. Now this is critically endangered. Again for prelims, इंडिया में जितने भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो रट लो,
बेसिक रिसोर्सेस आपके पास होंगे, शंकर आईएएस होगा या फिर पीएमएफ आईएएस होगा, अच्छे फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यू शुड बी मगिंग अप ऑल दीज नेम्स, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर ये गलत है, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इज इन न्यूज, right? So electoral bonds were introduced in India in 2018, not 2014, right? Electoral bonds can be purchased through bank transfer and paying cash from State Bank of India. No, इसी को तो एलिमिनेट करना था हमें, right? So there should be electronic transfer. ये incorrect है. Donors of electoral bonds enjoy tax redemption, we can say exemptions by buying the electoral bonds. This is true, no? Government provides tax benefits. Indirectly it wants the people to buy electoral bonds ताकि उनका excess money में वो tax benefits मिलेगा, political funding भी हो जाएगा. So here only one, right? तो आपको पता है 4 windows होते हैं साल में bonds खरीदने के लिए. Certain specified branches of SBI, सर्टन डिनोमिनेशंस में ही ये मिलता है, 10,000, 1 लाख, उसका कुछ तो है उस एग्जैक्टली यू शुड नो 4 और 5 डिनोमिनेशंस है, उसी में मिलेगा वो, राइट? एंड यू शुड नो दैट विद इन 15 days दैट पर्टिकुलर बॉन्ड शुड बी रिडीम्ड बाय द वी कैन से पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स स्पेसिफिक अकाउंट विथ SBI ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रोविजंस है स्पेसिफिक, आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। फाइन, ओके, दीज आर टुडेज MCQs. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? फाइन, लेट अस स्टॉप देन, ओके।